ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಗುರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಗುರು ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದಂತ ಆಂದು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಂದ್ ಅವರ ಹೆಸರು, ನಾವು ಆಂದು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ 2023. ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರು, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಸುರೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ನವರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಶೋಕ್. ದಯಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಡುವಂತ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ನ್ಯೂ ಶೈನ್ ಚೊಕ್ಕಬಿಟ್ಟು ಇದರ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಘಟಕರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ, ಗೋಪಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶಂಶು ಇವರಿಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಆಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್, warm welcome for this prestigious cricket tournament. Suresh Chilimbi, one of fantastic all-rounder. Uday will go into welcome him. Ashok is one more very good all-rounder. ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಸುಕೇಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆರಂಭಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಹಸುತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರ ದಿವ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿತೆ ಶರಣ್ಯೇ ಶ್ರೀತ್ರ್ಯಂಬಿಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತ ಜಂಬೋಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಇವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಶಂಶು ಕಂಡಪಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ 2023ಯ ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ನೀಡಿದಂಥ ಶಂಶಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗಲಿದಂಥ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೋರಿ ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆನವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರುವಂಥ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ BN ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಇವರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಸುರೇಶ್ BN ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ನ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶು ಖಂಡತ್ಮಲಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಇಯಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ need to give the respect for the decision of their umpires. This is the one way if you want to get the tournament will going to be successful. You need to respect the decision of umpires. ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲನೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 3 ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇದೀಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಲಿಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಇದೀಗ ಎರಡು ನಾಯಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನಾಣ್ಯ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನ್ಯೂ ಶೈನ್ ಚಕ್ಕಪೇಟು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. Roland Pinto, sir, will going to explain the rules and regulation of the cricket. It's so important for each and every captain to know the rules and regulation before they are going to play their match. And umpire Roland Pinto, one of the experience, more than 38 years of experience in both overarm and drum cricket, and he is the one absolutely the legendary umpire. And he will going to toss the coin along with the two captains and two chief guests, Umesh Kotian as well as Samshu, witnessing this tossing ceremony with the two captains. The new friends Chakkubetu and new friends Krishnapura, two neighboring teams, so we'll go into play each other, new friends as well as new shine, and I think it will be a very good contest between two very good neighboring teams, and wait and see which team will starts the journey with the victory. Everyone will go into play the cricket with a true spirit. The true spirit of the game is in the sense respecting your umpire's decision, respecting your opposition, whatever the result, whether the loss or win, but you need to respect, you need to congratulate. If your opposition will go to win, you need to congratulate. Now it's a toss which is completed. Toss which is won by new friends Krishnapura. Captain won the toss, and congratulations umpires as well as chief guests. And here is the two captains. Now it's going to be a introduction of the players. Introduction of the players from our chief guest. All we can see that the legendary player of Gori Young Boys, Umesh Kotian, leading from the front, Samshu, Karna, Anand, Suresh, Pramod, Sriraj, Guru, Ashok. Wonderful, wonderful performers of Gori Young Boys. Those who are responsible for taking their team's name into very high, the sky level. And still, it's Gori Young Boys having a name and fame because only because of even though they're stopped their play, but their heart still in Gori Young Boys success in the present cricket. Also the Gori Young Boys players doing a great job, and that means that it's going to be a greatest tribute for late Suresh Bian, one who really saw the dream of Gori Young Boys to be the one of the top team in South Kenda district. And still now they are going very well. I hope this tournament will go into finish with some great memories. The first day of this cricket tournament, and Gopi certainly, of course, Suresh Bian not with us, but his sweet memories always with us. And as far as this particular cricket tournament is concerned, Sauhardha Trophy 2023, and I think the 3 days of cricket is going to be one of the most entertainment of day of cricket, because after a long time we are coming back to the UCG, because in this present season we are not having that much of big tournament, but this is going to be one of the opportunity for all the teams to showcase their talent and try to lift the very prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Gori Young Boys. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला गोरी यंग बॉयज ने आयोजित इस वक्त किया है। श्रीमान अल्फाज इनके नेतृत्व में इस श्रृंखला का आयोजन इस वक्त किया गया है। और
दिवंगत सुरेश बीएन इनके मधुर हाथ में। और जहाँ तक सुरेश बीएन का सवाल है, श्रीमान सुरेश, दिवंगत सुरेश बीएन ने कई सालों तक गोरी यंग बॉयज़ को एक यशस्वी पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया था, और आखिरकार आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें ज़रूर हमारे दिल में ताज़ा रहेगी। जब तक अंडरआर्म क्रिकेट रहेगा, सुरेश बीएन का नाम ज़रूर रहेगा। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं सतीश की इन 3 दिनों में एक बेहतरीन क्रिकेट, एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दर्शक भी हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों की मात्रा में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और 3 दिन में क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस सौहार्द ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत। और इस उम्मीद अपेक्षा के साथ वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू सतीश। Well, Gopi, and the first match, absolutely you're right, Gopi, and he is on Suresh B, and definitely going to be the unforgettable personality as far as cricket is concerned. And coming back to the first match, the toss which is on by the team Chocobeto, New Friends Chocobeto. Little correction, yes, Overside Chocobeto. They won the toss against New Friends Krishnapura, and I think they are elected to the field first after winning the toss. And I think as always is going to be the good to see that whenever the captain in the morning in the UCC cricket ground after winning the toss, they're not really having any agitation at all to the field first, because the first and 15 minutes and half an hour is going to be encouragement for the bowlers. That's why the captain after winning the toss elected to field first, and we will see how these two teams will go into battle for the victory in their inaugural match. We are still going into the inaugural match in a commentary box, and warm welcome for this prestigious Sauhardha Trophy 2023. We have Jaya, the one more legend player of Urva Friends Cultural Association, UFCA. Warm welcome, sir, for this prestigious Sauhardha Trophy 2023. One of the fantastic wicket-keeper batter, and nowadays is giving service as one of the best pitch maker and the curator, especially when you're coming to the UCG cricket ground. So welcome for this prestigious cricket tournament for Jaya of UFCA. Thank you. And he will going to be welcomed by the one of the Gori young boys for this prestigious Sauhardha Trophy 2023. So at the same time, a special thanks to our one more former cricketer of Gori young boys, left arm medium pace bowler, and he's the one, definitely he's been a nightmare that time. And of course, Iqbal of Gori young boys knows that, because each other played a very good game of cricket those days, and now he's giving service Madhu as a photographer. So once again, thank you very much, Madhu, for spending your important time in this inaugural ceremony, catching the very beautiful and golden moments of this inaugural ceremony. And we hope he will going to continue his service throughout this tournament for this prestigious Sauhardha Trophy 2023. Thank you for Madhu of Gori. Thank you. I request the captains of the first match, both captains, to please to be reported here to select the ball, please.
ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎವರ್ ಶೈನ್ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. The news from the center is that after won the toss, captain of New Friends Krishnapura won the toss and elected to field faster, so that they are going to ball fast and they elected to ball first. And the first ball from the commentary box end. ಎವರ್ಶೈನ್ ಚೊಕಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. The first ball, right arm over the wicket to Zahir, and he wanted to sweep that ball. Then oh my goodness, looks like it's going to be the opportunity which is created for the first ball itself for the run out, because both the batters are not really confident enough for that first run. Ball almost within the reach of the batters. Leg cutter coming into the bat, coming around the legs of the batter. The wicketkeeper behind the stump misses that one, and the opportunity for the batter to complete that single. Right arm over the wicket bowls. This time again that ball is pitched outside the line of slight a bit of ball is going down the leg stump after ball has got a little bit deflection from the bat, and opportunity for the batters to complete that one more run. With that one more run, scoreboard now moves on to 2 on the board. So very young Mazim, the very young talented bowler, is in action. He's bowling third delivery of the over number first. Right arm over the wicket. Zahir. Flum, absolutely flum, no doubt at all. He's tried to play that one across the line of the delivery, tried to swing that one, pays the penalty for that. Nowhere near the line of the ball, isn't it? The ball which is almost coming into the batter, and the batter tried to play that one against the line of the ball, misses that one completely, finding himself right in front of metal stump, and umpire has got no hesitation, Mohan Iyadi, to raise his finger. First wicket is back into pavilion. It's 2 for the loss of 1 wicket. Evershine Chokabettu are back. Their first wicket which is back into pavilion. So just I mentioned earlier that these two teams, the neighboring teams, knows each other very well. What could be the strong or what could be the weak point of the players of both the teams, so that it's going to be a very good competition in the first match itself. And very soon we are going to get the live telecast of this Sauhardha Trophy 2023, and here is the third replication of after completion of first over. It's going to be a slow start, shackling start here for New Shine, Evershine. 2 for the loss of 1 wicket. Far outside the black stump, and little correction. First over which is in progress. It's not completed. The first over is in progress. One more wide has been bowled by the Mazim, and 3 for the loss of 1 wicket. 3 for the loss of 1 wicket. Here is again right arm over the wicket. Bowler bowls. This time appeal for leg before wicket, but batsman showing his bat. That ball slide a bit of even that ball pitched outside the line of leg stump, but batter has got a bat onto that little bit. So that ample time for the batter to complete the single. It's 4 for the loss of 1 wicket. Irfan is on strike. Mazim, lovely delivery, beautifully bowled. Perfect one outside the line of off stump. The batter went for the drive, but misses the line completely. Then wicketkeeper also slight a bit of fumble, but ball which is almost very close to the wicketkeeper, so that batters are not interested for the run. 4 for the loss of 1 wicket. Looking for the improvising cricketing stroke, a ball but went to the short fine leg region, but both the batters are very confident to get the single, not from the bat, it's from the leg by. So first over completed after completion of over number first. Evershine Chokabettu has got a start where we can't say that it's a good start, but I think both the teams has got a start here. 5 runs for Evershine Chokabettu, the 1 wicket for New Friends Krishnapura. For the latecomers, you are watching match number 1, the inaugural match after that
The inaugural which is completed, inaugural ceremony which is completed, and by presence of some legend players of Gori Young Boys, Umesh Kotian and Shamshu Kandatpalli. They inaugurated that Sauhardha Trophy 2023 by lighting the lamp in the beginning, and then this time chip that one, but not enough power. Not enough power to get past that infield. It's half-hearted stroke came from the bat of the batter Irfan, and he just pays the penalty for that. First wicket is back into pavilion, and the bowler Harris strikes in the first ball, and wicket number 2 which is back into pavilion of Evershine Chocobeto. They are looking in trouble now after losing 2 wickets for just 5 runs. The very good start here for a team of Friends Krishnapura, and Friends Krishnapura captain early morning, they won the toss, inaugural toss, and they rightly elected to field first, and opening bowlers doing a right job. After the first bowler Mazim picked up 1 wicket, here is Harris picked up his first wicket, and is bowling from the far end, late Suresh BNN. The new batter in is Alfaz, walking towards the middle. Alfaz is the striker. Munna is in on-strike again. Harris balls. This time very intelligent cricket there from Alfaz, because he wanted to play the reverse stroke, seeing that it's very difficult to play the reverse shot, and just like the left-hand batter steering the ball down the third man division, he just steered that one without changing his position. After he takes the position to play the reverse sweep, then he just steers that one and down to short third man division for a single. With that single, score moves on to 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. The morning, it's going to be not that much of an easy condition for the batters. It's a bright sunny morning, absolutely it's hot, and the month of April and beginning of course the May, almost we are in the almost the end of April month, but condition of weather is absolutely hot. The morning itself, it's more than 33 degrees Celsius here in UCG cricket ground. Here is the next one, Harris balls. This time, let's slight a bit of ball is angling down the leg stump. Batsman try to hit the ball, but not quite got that one from the middle of the bat. If you're able to get the ball middle of the bat, he can get at least boundary for that. But ball which is not really coming to the bat, and maybe the condition as well as maybe the ball which is used for this particular tournament, which is slight a bit of soft in the nature, and it's not an easy condition. This time went for the sweep shot, ball is in there and is gone. Alfaz tried to sweep that one, but he got a top edge, and because of a ball is has got a slight bit of extra bounce, so that ball is not coming to his bat. The top edge taken place, and the fielder at short fine leg not making no mistake at all. It's wicket number 3 is back into pavilion. Alfaz departs, and Evershine Chocobeto, and fails to shine in the first 2 overs. Their wickets are tumbling here. It's 7 for the loss of 3 wicket. The new batter is walking towards the middle, Samraz. It's not Samraz, it's Amraz. The batter is walking towards the middle with a lot of responsibility, because they lost 3 wickets, needed some partnership. He wanted to get a good score on the board. But so far, I think the bowlers of New Friends Krishnapura are dominating here. And why not? Why not? Because the condition is almost suitable for the bowler to exploit. And this time the bowler slight a bit of wide of the crease is bowled outside the line of slight a bit of outside the line of leg stump, and no contact with the bat of Amraz, but he managed to complete the single. With that single, Skobana moves on to 8 for the loss of 3 wicket in the over number 2nd is in progress. The last time in this over, bowler bowling
from the far end. And just a bit of, he wanted to change the field. And he will go into ball right over the wicket. This time he got a connection. He got the connection. Not only that he got a connection, but he got a fantastic placement as well. Just last, he's just breaking the shackle. Ball is just falling short of the boundary line. One bounce into the fence for 4 runs. So with that boundary, Skobana moves on to 12 for the loss of 3 wicket. Absolutely fantastic. Just umpire wanted to see that whether it's a ball travelled outside the boundary line, and now umpire just taken off their decision. They're saying that is a 6. It's not a boundary. Slight bit of ball is just clearing the boundary line, and fantastic, magnificent stroke there from the batter Munna in the occasion. Just got that one right from the mid of the batter. Timing is exquisite, isn't it? Timing is exquisite. But this is not a line to ball when you're bowling in the power play overs. And even though he got a mid wicket in the deep, but that mid wicket is not quite enough to stop that 6. This is a much required big stroke came from the bat of the batter Munna, because the runs which are dried up, and it's 14 for the loss of 3 wicket after completion of over number 2. Third over will going to start from the commentary box end. Ashfaq brought into attack. Ashfaq, the new bowler. The great shot. Actually, the Munna in that occasion, you know exactly that's the last delivery of the power play over, and didn't got boundaries and 6s and that power play overs, so that if he wanted to back in the game, he need to get one big shot, and he's just choosing right delivery to flick Zadon off his legs down to bin wicket for a 6. Very good shot, and especially in this condition where there is no wind at all in the ground, that's going to be a very quality cricketing stroke. This time they're going for the extra run, and this is going to be a first spectra white. White plus 1, that means 2 whites to be added to total. With that 2 extras, Skobana moves on to 16 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress. This time nicely steers that one down to just give the oh my goodness, there's a fumble. Oh, and he looks like at last he managed to collect the ball. Quite a little bit of comedy of error has been done in that third man region. In fact, because both the fielder, you can see that, and one more fielder is chasing the ball. But by collecting the ball, looks like the ball is just hitting his leg, and his ball is still is going too far away from his. And 2 fielders absolutely having a slight bit of miscommunication, and because of that, ball almost looks like it's going to be a boundary, but which is stopped by the one of the fielder just inside the boundary line. Couple of runs, and with that, one more single has been taken in the very next ball by placing the ball right in front of short extra cover region. And with that single, Skobana moves on to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress. Driven to the extra cover. Good piece of fielding there by the fielder. This time ball went very quickly to the fielder, so that they are not interested to go for any run. 8 overs matched. 8 overs side to be played. Driven nicely, bowler's back drive, and this time ball just hitting the non-striker's hand, and so that batter has got opportunity to complete the single. So with that single, Skobana moves on to 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Again the bowler back to his bowling mark. Ashfaq round the wicket operates. Excellent ball, excellent delivery in the this time. Oh my goodness, absolutely mix up. Absolutely mix up, because Munna, after steers the ball down the 3rd man, he wanted to get the single, but his partner is not interested, and Amraz is not responding for that. And even though Amraz saying no, but still Munna is charging towards the non-striker's end, and unfortunately Amraz sacrificing his wicket. He's just sacrificing his wicket for his partner, and the wicket number 4, which is back into pavilion. Once it looks like the partnership is slowly building up. It's going very well for New Shine, Evershine, but
but unfortunately Almaz is back into pavilion. Zahir. Zahir is a new batter in with the jersey number 77. The 4 wicket which is back into pavilion. I think there is nothing wrong with the score for Evershine, but they lost 4 wickets. That's a big problem here, that Evershine has to get one good partnership if they wanted to get a good total. Right arm round the wicket, he bowls. This time, oh, lovely piece of work. Wicket-keeper behind the stump completes the job. One more wicket is back into pavilion. Still, just a blink of eyes, the wicket-keeper behind the stump completes the job. Arish Padil, squad umpire, has got no hesitation at all. It's a good work, and the back foot of the batter absolutely just slight a bit of lifting off, and when the wicket-keeper completes the job, his back foot is in there, and rightly so, umpire has got no hesitation to call that stump out. Wicket number 5, which is back into pavilion. That means bowler Ashfaq has got 2 back-to-back wickets. Back-to-back 2 wickets in the sense one is a run out, which is in the 5th ball, and in the 6th ball, last ball, he got a wicket. Asif is the new batter in. The half of the batsmen of Evershine back into pavilion. It's not a good start actually. And just like I mentioned, nothing wrong with the run rate. They got very good run rate. 20 runs in this condition is going to be good. But the question raising here for Evershine is that still there are 5 overs left in their innings, and if keeping 5 wickets, can they able to complete that 5 overs? If you're able to complete the 5 overs, they can get some good score. That starts with a Spectra wide. Absolutely Spectra wide. Chance of run out. Directed, it might be a 1 more wicket. Directed, it might be a 1 more wicket here for team New Friends. But Evershine, the batter is lucky here. And especially the batter Asif is running towards the danger end. That means in the striker's end is lucky there. Ball just misses the stump. And ball which is just going over the top of the stumps. Again, wicketkeeper is absolutely magnificent behind the stump, but here is umpire, no hesitation to call that wide because that ball is pitched outside the run flex stump and going further away. But the way that wicketkeeper collects the ball is always going to be a difficult job. Whenever the wicketkeeper collects the ball outside the line of leg stump, it's a slight bit of extra effort and extra technique which is required. And I think the wicketkeeper Mubarish has been outstanding when he collects the ball outside the line of leg stump. He's been outstanding. The judgment is so important when you are collecting the ball outside the leg stump. You need to be very sure about the line of the ball where it is pitching because the batter is coming right in front of you. And it's beautifully ball. Flum, absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. Ball pitched in a line. Pitched in a line in the sense ball pitched in a leg stump, a slight a bit of leg cutter, and when ball is hitting the back leg of the batter, is finding himself right in front of middle stump, and umpire Arish Padil has got no hesitation to call that out. 1 more wicket is back into pavilion. Evershine, the batters are struggling in the middle. It's 23 for the loss of 6 wickets. All we can see the batting cards of team Evershine. There is a disappointment. Only the Munna has got runs. Otherwise, the first batsman is out for the Golden Duck, Sauhardha. Then Irfan is out for 1. Then Alfaz is out for 1. And Amraz is out for 1. The Zahir is out for duck. And Asif is out for duck. That means altogether 3 ducks and 3 single. The only 1 runs which is scored by all 6 batsmen. And that means all 6 batsmen together, they scored only 3 runs. It's absolutely disaster for any teams. The fails to contribute for the team. So new batsman and is very experienced. Nawaz just came into middle. Left-hand batter, you can bat, but he is knowing for his bowling. One who is represented for
NM cricketers, Mangalore, one of the top team for a long time. Now he is playing for Evershine. It's in a difficult condition. He came into bat. Outside the line of left stump, a misjudgment by Nawaz. He's left the ball, thought it might be a wide, but it is well within the reach of the batter. Couple of inches that ball inside the line. So Nawaz misjudging the line, and there is no chance at all for anyone. This time again, Mazim balls. This time umpire not having any hesitation to call that wide. With that extra score, but moves on to 24 for the loss of 6 wicket, and the over number 4 is in progress. Mazin balls the copybook style, leaning into the drive down to deep long off region for a single. With that single score, moves on to 25 for the loss of 6 wicket. The 4th over is in progress from the far end, is in under progress. So far it's a so good over there from Mazin. Nicely plays it down to deep long. And the one player looking so confident is Munna. Has got a responsibility of batting till the end, but he needed one support from other end. And I think Nawaz, being the experienced campaigner, he can be the best option to get some partnership, get some support from other end. 26 for the loss of 6 wickets. Drives that one, lack of placement down to short extra cover region. One more dotted delivery. Score remains on 26 for the loss of 6 wickets. Runs are good here, but I think they lost 6 wickets. One more over completed after completion of 4 overs. Evershine and of course they got a good runs on the board, but they lost 6 wickets. And wait and see. Having 4 wickets in hand, how can they can get some good score here? And before the next over going to start, time to change in commentary box as well. Time to ask my friend Mr. Gopi, the first time today in our commentary box of this Sauhardha Trophy 2023. And it's over to Gopi. Good morning to you, Gopi. And the good start, but I think good start only for the fielding team. They got 6 wickets, but I think 26, which is a good score for Evershine Chocobeto. But the question raising here is that having 4 wickets in hand, can they able to complete their remaining 4 overs? If they're able to get that, able to complete that 4 overs, then I think they can get 50 plus runs on the board. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता। तो इस वक्त द टेस्टिंग टाइम इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, यहाँ पर कम से कम 50 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुँचना होगा अगर एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना। तो 4 ओवर में बेहतर गेंदबाजी इस वक्त की है गेंदबाजों ने। एवरशाइन चोकोबेटो इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करता हुआ, और बेहतर गेंदबाजी इस वक्त की है न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुर के गेंदबाजों ने। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो सिर्फ 26 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक छक्का जरूर लगा था उनकी पारी में, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 26 रन 6 ओवर में बना चुका। और जो गेंद इस श्रृंखला में जो इस्तेमाल की जा रही है, वो गेंद का स्वभाव, नेचर ऐसा है कि गेंद बल्लेबाजों के बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है। स्ट्रोक्स अगर खेल भी लेते हैं तो गेंद ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, हल्की सी गेंद है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कम से कम 50 के आसपास का स्कोर सामने वाले टीम के लिए बेहतर रहेगा अगर उनके गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हैं। तो 5वां ओवर शुरू होता हुआ और बॉलर गेंदबाजी वन बॉल लेफ्ट इन फैक्ट अंपायर इन द प्रीवियस ओवर। तो एक गेंद पिछले ओवर में बाकी है। कुल मिलाकर 3.5 गेंद का खेल यहां पर पूर्ण हो चुका है। 26 रन बच चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। It's 26 for the loss of 6 wicket, and last time in this over the bowler is now going to bowl the delivery from that side and from Suresh BN, and और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो माजीन इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की अंतिम गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज
नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs. In fact, exactly 6.75. The present run rate is now progressing here for them as far as the present run rate is concerned. Still, they got only 4 wickets kept intact. और जहाँ तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर का, तो इस वक्त यहाँ पर चोक्काबेट्टू के सामने ये मुद्दा ठहरता है कि उनके बल्लेबाज बचे हुए 4 विकेटों की मदद से अपने बचे हुए 4 ओवर को पूर्ण करें और जितने भी रन हो सके बटोरे इन बचे हुए 4 ओवर में। और जहाँ तक सवाल है कृष्णापुर के गेंदबाजों का, तो यहाँ पर उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि जल्द से जल्द विकेट उखाड़ कर चोक्काबेट्टू की पारी को सिमट दें। तो यहाँ पर ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा इस वक्त, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अशफाक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जब किया स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू। गेंद को उछालना चाहता गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल पाया और फॉलो थ्रू में जैसे ही गेंद उनकी ओर आई, अपने ऊपर की ओर झपकते हुए उछलते हुए गेंद को झपक लिया उन्होंने अपने दोनों हाथों में। देखिए किस तरीके से होता है, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड अ फैंटास्टिक कैच ऑन हिज फॉलो थ्रू टेकन बाय द बॉलर। और गेंदबाजी करके फॉलो थ्रू में कैच लपकना उतना आसान नहीं है, अपने शरीर के संतुलन को कायम रखना पड़ता है, बॉडी बैलेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अपने गेंदबाजी करने के बाद अपने शरीर के संतुलन को कायम रखा, बहुत ही जल्दी से रिकवर होते हुए गेंद के लाइन पर अपने हाथ को लाते हुए कॉट एंड बॉल के रूप में इस कैच को लपक लिया गेंदबाज ने और इसी के साथ 1 और विकेट यहाँ पर गिर चुका है 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है इस वक्त, 10:10 बज चुके हैं सुबह के और धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है, कुछ हद तक बादल नीला आकाश था इस वक्त दिखाई देते हुए, सूरज कुछ हद तक बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है और लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त 10 मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर और कुल मिलाकर इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के बारे में अगर कहा जाए तो आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुई और ये श्रृंखला इस वक्त इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी, शॉर्ट थर्ड पैन पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस continuing here from the bowlers of New Friends Krishnapur और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर एक्स्ट्रा क्विक कर रहे थे, लास्ट मिनट गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन से इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, 30 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त कलाइयों के सहारे डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति, 5 overs completed, 31 runs on the board, 7 wickets lost and 3 overs remaining in overall calculation in their innings. Bandar Brigades will take over New Star Kunjatur in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Bandar Brigade ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। So 3 overs left in overall calculation in the inning, 6th over starts और गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, जबकि बल्लेबाजी शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
धूप एक बार फिर से प्रकट हो चुकी है मैदान पर। सूरज बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज निजाम, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, नॉट क्वाइट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर, 7 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त निजाम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इसी श्रृंखला के नियमानुसार आफ्टर पावर प्ले। और राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट कनेक्टेड दैट वन क्लीनली एट द सिचुएशन। और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का, तो रन उन्हें मिले जरूर एक। गेंद को तिरछा हटाना चाहते थे, रिवर्स शॉट के जरिए तिरछा मोड़ना चाहते थे। गेंद पहुंची इस वक्त सीधी रफ्तार के साथ मिड विकेट पर कुछ हद तक। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से यहाँ पर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर, 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निजाम, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ जंप पर आते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर बैकफुट जो कि क्रीज पर था अंतिम क्षण में, और इस वजह से बल्लेबाज सब कुछ सुरक्षित बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग की थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़े से बैकफुट पर अपना बैकफुट लैंड कर चुके थे, तो इस वजह से बल्लेबाज बाल बच चुके हैं। थोड़ा सा भी फुट को वो लिफ्ट करते उठाते तो निस्संदेह यहाँ पर उनका विकेट गिर सकता स्टंप आउट के रूप में। तो कुछ क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर बोर्ड रुक चुका है 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, सौहार्दा ट्रॉफी 2023 जनाब अल्फाज इनके नेतृत्व में इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला श्रीमान दिवंगत सुरेश बीएन इनके मधुर याद में इस श्रृंखला का आयोजन यहां पर किया गया है। यह गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद पहुंची गली फील्डर के हाथों में। रिवर्स शॉट गेंद को खेला था लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं और गली फील्डर ने बेहतर तरीके से इसका को लपका अपनी बाईं ओर जाते हुए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था और कुछ ज्यादा मेहनत मुशक्कत इस वक्त फील्डर को करनी नहीं पड़ी, गली क्षेत्र पर कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ 8वां विकेट गिर चुका है। 8 विकेट डाउन। रियल प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन एट दिस सिचुएशन। तो न्यू स्टार कुंजतूर और बंदर ब्रिगेड के बीच में अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार मैं फिर से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दावत देता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करो ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही दर्ज करने के लिए। तो 33 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और निजाम एक सफल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। अल्फाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस वक्त गेंदबाज निजाम बेहतर रन अप उनका। पहले उछलने के बाद देखिए किस तरीके से गेंदबाजी वो करते हैं अपने लाइन को बरकरार रखने के लिए, अपने रन को बरकरार रखने के लिए। गेंद को कई बार और निशाना इस वक्त चूक चुका है। 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। अगर निशाना स्टंप्सों पर सही बैठता तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और बल्लेबाज इस वक्त बाल बच चुके हैं और फिर से एक बार गेंदबाज नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ तो ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए निजाम है गेंदबाज। ये गेंद बाउल्ड आउट ऑफ कट डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। स्टीयर करना चाहता गेंद को, लेकिन गेंद कुछ हद तक घुमाव लेती हुई अंदर की ओर आए और गेंद बल्ले और लगभग पैर को चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ पर जा टकराए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से हुआ था। आई थिंक इज गॉट इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स। और इसी के साथ 9वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 33 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और देखिए यहां पर हल्के से आई थिंक इज गॉट इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। The ball turned a little bit at the last moment, just evading, and after being got his inside of the bat, inside edge of the bat, it stuck to his mid leg stump. Bells are disturbed. Number 11 and the last batsman is now comes out to the middle. तौसीफ इस वक्त बल्लेबाजी के लिए इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। और जहां तक निजाम का सवाल है, इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी ओवर माफ कीजिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति।
6 overs completed, 33 on the board, 9 wickets down. 7th over starts in their innings. एरिस इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दूसरे छोड़ के बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज, और इस वक्त एरिस अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सिर्फ एकमात्र विकेट सुरक्षित इस वक्त चोकोबेट्टो के लिए, और ओवर की पहली गेंद क्रीज के कोने से ये गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। ब्राइट सनशाइनी मॉर्निंग, इट्स ऑलरेडी 15 past 10 एंड द रेस ऑफ सन गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर एज द टाइम प्रोग्रेसेस। और भीषण गर्मी का एहसास खिलाड़ी और दर्शक दोनों इस वक्त करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद पहुंची बैक टू द थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ एकमात्र विकेट इस वक्त सुरक्षित है, और इस वक्त उनके सामने यह मुद्दा ठहरता है बल्लेबाजों के सामने कि वो बचे हुए ओवर्स को इस वक्त पूरे करें। कुल मिलाकर उनकी पारी में अब गेंदें बाकी हैं। तो 11 गेंदें कुल मिलाकर अब उनकी पारी में बाकी हैं। तो एक गेंद फेंकी जा चुकी है। 5 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और अगली गेंद लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, स्वीप करना चाहा अंतिम क्षण में, और चूंकि एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर था विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं लेना चाहा। सही निर्णय बल्लेबाजों का, क्योंकि रन लेने की जोखिम उठाते तो शायद यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई क्षति नहीं, स्कोर रुक चुका है 35 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कोने, यह गेंद टॉप एज गली फील्डर के हाथों में, लेकिन देखना यह है कि गेंद बल्ले से टकराई थी या पैर से, जी नहीं, पैर से गेंद टकराई थी। लेग बाई का इशारा, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद हवा में उछली थी और गेंद को लपका जरूर, लेकिन गेंद पैर से लगकर उछली थी, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और एक बार फिर से गेंदबाज एरिस, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ ओवर द विकेट, क्रीज के कोने से ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक्स्ट्रा विकेट गेंद, स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में गेंदें बाकी हैं, अंतिम गेंद बाकी, और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त एरिस तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। उनकी पारी का अंतिम गेंद एरिस के हाथों से, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन का इजाफा। इस ओवर की अंतिम गेंद थी, पारी की अंतिम गेंद नहीं थी। एक ओवर का खेल अभी भी बाकी है, तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रन 9 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 overs completed, 37 on the board, 9 wickets down. Still the problems are continuing here for the batsmen of Chokobetto, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in the innings. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Sauhardha Trophy 2023. The first match of this tournament is now progressing here. और यहाँ पर ये श्रृंखला का पहला मैच, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत पहला मैच खेला जाता हुआ। Last over starts, just talking about this tournament, and a fantastic tournament is now progressing under the great leadership of Mr. Alfaz in the name of Sauhardha Trophy in the sweet memory of a late Suresh Bian. और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन वातावरण, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और यहाँ पर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ दर्शकों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। गेंदबाज निजाम गेंदबाजी अपना शुरू करते हुए अपना दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मिसअंडरस्टैंडिंग, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी वाइडर, और इस वजह से बल्लेबाज बाल बच चुके हैं।
3-4 कदम दौड़ने के बाद थोड़े से झिझके इस वक्त, लेकिन संभल कर दौड़े और आखिरकार वाइड थ्रो आने की वजह से बल्लेबाज एक रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके। देखिए काफ़ी वाइड थ्रो आया था, ऊंचा थ्रो आया था और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। और इस वक्त अंपायर ने इशारा किया है कि उनके स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय समाप्त हो चुका है, तो एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर ज्यादा तैनात किया जाएगा। एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के बाहर जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं वहां से एक खिलाड़ी को हटाकर सीमा रेखा के अंदर बुला लिया जाएगा और वहां पर एक खिलाड़ी ज्यादा इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात था। तो अब 3 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और इस बीच 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। सिर्फ 3 खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। और देखना यह है कि बल्लेबाज यहाँ पर जो खाली क्षेत्र कुछ हद तक हो चुका है, फैल चुका है, उस खाली क्षेत्र का किस तरह यहाँ पर फायदा उठा पाते हैं। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तौसीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निजाम की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट तौसीफ के लिए। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 39 रनों पर 39 for the loss of 9 wickets in the over number 8 and the last in progress. The first match of this prestigious tournament, Sauhardha Trophy 2023 is now progressing here. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी। राउंड द विकेट इस गेंद को फेंका गया था गेंदबाज द्वारा। एक रन का इजाफा, 40 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी है उनकी पारी में 3 और गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, ड्राइव करना चाहा ऑफ साइड पर, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, ऑन साइड पर और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 41। जितने भी रन ना इस अंतिम ओवर के अंतिम विकेट की मदद से बनते हैं वो उनके लिए इस वक्त फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और गेंदबाज निजाम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव किया, स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड इस वक्त उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन रक्षण वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लास्ट बॉल था, अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज निजाम तैयार। नंबर 11 और अंतिम बल्लेबाज तौसीफ इस वक्त सामना करते हुए निजाम की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ये गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, द बॉल केम अलोंग द कार्पेट, परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी एंड परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी टू एंड देयर इनिंग्स एंड द इनिंग्स इज अप फॉर Chukwuebutu. New star Chukwuebutu, they finished with 42 for the loss of 9 wickets in the stipulated Evershine Chukwuebutu. In fact, they finished with 42 for the loss of 9 wickets in the stipulated 8 overs and they set a victory target of 43 for new friends Krishnapur. 43 they have to score in the stipulated 8 overs, and as far as the required run rate is concerned, 5.38 the required run rate for them at this situation. 5.38 they have to score for victory. 43 they have to score in the stipulated 48 delivers with the help of 10 wickets. That means in the stipulated 8 overs, 43 they have to score with the help of 10 wickets with a required run rate of 5.38. They have to score for victory. The present equation shows for them and their inning starts within just short while. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब कृष्णापुर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. And target in front of team New Friends Krishnapura. Exactly 43 to win the match in stipulated 8 overs. And looks like it's going to be a total where it can be the slight bit of a competitive total, but not a winning total. But they can win the match if they ball well, fields well. And wait and see how well Evershine will go into depend this total. And time now exactly 10 past 30, exactly 10:30. And the max match, the match number 2 will be played between New Star Kunjaturu versus Bandar Brigade. So that I request both the team's captain and the players kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Looks like the experienced Nawaz will go into start the proceedings from the commentary box end. And 42 for the total score, 43 is going to be a target for New Friends Kunjatur. First ball outside the non-back stamp. Nothing much to do with the delivery ball. Is just going to miss the direction, the line what Nawaz is trying for. And trying for the sharp incoming delivery, but ball is just missing the line. And the wicketkeeper fails to collect the ball. The batter has got opportunity to cross over, and that means a couple of runs straight away into the account, and without any single ball. They started their open their account 2 without loss of any wicket. Imran to strike. Here is that first ball. He faced nicely down to deep whitish long on for a walkable single. With that single, Imran, the experienced campaigner, is off the mark, and total score now moves on to 3 on the board, 3 without loss of any wicket. Javed. This time, beautifully ball. This is a change of pace. Absolutely magnificent delivery. This is what you call. That is what you call the experience of Nawaz. Absolutely fantastic slow run. Have a look at that one. How slow is it is. The batsman early into the drive thought that it might be one more rush. Sharp and a quick incoming delivery, but it's not a sharp incoming delivery, but it is slower like cutter again from Nawaz. And here is first wicket is back into pavilion. Three for the loss of 1 wicket. This time, straight to the answer fielder. Both the batsmen are in the same end. Absolutely disaster. Imran back into pavilion. This is a huge wicket. This is a huge wicket here for a team. Evershine Chocobeto. They are shining in the first over itself because I've already mentioned that they are not depending a big total. They're only depending on 43 to win the match for the opposition. That these kind of start definitely going to give a lot of confidence to win this match. And this time, I think absolutely no chance at all for any run because the new batter played that one straight to the hands of the fielder out there in the square leg region. But Imran, without seeing the fielder, without seeing the reaction from his partner, is just went for the blind run, and he just pays the penalty for that because there is no chance at all for any run. It's a 3 for the loss of 2 wickets.
Just like my friend Gopi is mentioning about the nature of the ball, which is a slight a bit of soft, so that it's going to be a testing time for the batters to get the proper timing, because ball which is not really coming to the bat, and that's why in the innings of Evershine batting, the highest run, which is a 12, which is scored by Munna. But Nawaz, his experienced campaigner, he scored 9 valuable runs. Now he's contributing from the ball. Bowling away from us. Left arm, around the wicket. Beautifully bowled. One more slower one. Absolutely perfect. Off cutter, but slower one. Ball is just almost outside the line of off stump, too far. But I think that ball just coming into the batter. And beaten by the pace. Slower one there from Nawaz. And there is no chance at all for any run. Azhar is on strike. Nawaz is on attack. This time slight a bit of outside the flex stump, but well within the reach of the batter. The batter tried to flex that one off his legs. Missed it completely. One more dotted delivery. Last time in this over, bowler bowling from the commentary box, and 3 for the loss of 2 wicket. Nawaz so far has got a good start from the ball. Wicket taking over and quite over. This time again is targeting the middle stump. They're going for the quick single into again. Once again the direct hit comes into play. But this time batsman is safe. This time batsman is safe. I think Mubarish is safe there. He's running towards the danger end. He wanted there's a direct hit, but because of it, runs very quickly between the wicket. Able to complete that single. With that single, first over completed. Chasing 43 to win this match. And the team New Shine Evershine has got a good start from the ball, but a shackling start here from friends